रोल ऑफ टीचर बियॉन्ड द क्लासरूम, क्लासरूम के अलावा टीचर किस तरह से इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर को। बिल्कुल ही जनरल सी बातें हैं। इस लेसन में आपने यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी, यू विल इंटरप्रेट द प्रोसेस ऑफ करियर डेवलपमेंट, practice reflective journal for professional development, use national professional standards for teachers as criteria for professional development। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि टीचर्स की एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है तो इसका मतलब क्या है। आइडेंटिटी को डिफाइन किया जाता है एज वेरियस मीनिंग्स दैट आर अटैच्ड टू ए पर्सन बाय देमसेल्व्स और एंड अदर्स। ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं जिनको देखने से आप प्रोफेशन का गेस कर सकते हैं। जिस तरह से एक टीचर को देखने से आपको पता चल जाता है दूसरे के इसका प्रोफेशन टीचर होगा, कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं पर्सनैलिटी के अंदर। बोलने का स्टाइल होता है, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग स्टाइल है, उसको देख के बताया जा सकता है कि बंदे का प्रोफेशन टीचर होगा। इन चीजों को कहा जाता है। प्रोफेशनल आइडेंटिटी इज डिफाइंड एज वंस प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, बिलीव्स, वैल्यूज, मोटिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। ये सारी बेसिस पे एक जो ओवरऑल पर्सनैलिटी बनती है वो आपको एक आइडेंटिटी देती है। प्रोफेशनल आइडेंटिटी अफेक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग इन द वर्क प्लेस। ये उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के रिजल्ट में जो चेंजिंग आती है वो एस्पेक्ट्स हैं आपका बिहेवियर और आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग इन दी वर्क प्लेस। Individuals' professional identities determine their moral decision making, that is, decisions related to does and don'ts, good and bad. Professional identification contributes to have positive performance outcomes such as career success. जितने ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आप में आती है उतना ही आपका करियर जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। A positive self concept about professional identity can protect a person from depression and anxiety. जितना आप प्रोफेशन को पॉजिटिव ले लेते हैं, अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाएंगे तो क्या होगा, आप नेगेटिव बातों को सोचना छोड़ देंगे, उतना ही अपन डिप्रेशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी, आप उतना ही पैशन के साथ अपना काम करेंगे और रिजल्ट में आपको सक्सेस मिल जाएगी। 5 necessary processes in the development of a professional identity, उसमें है reconciling prior beliefs with teaching, locating identity within a community of practice, managing emotional aspects of identity formation, integrating experiences and theory of teaching profession and developing a sense of self-confidence। एक टीचर को प्रोफेशनल बनाने के लिए ये 5 प्रोसेसेस हैं जिनको अडॉप्ट करने के बाद एक टीचर अपने आप को प्रोफेशनल कह सकता है। Regulators work to promote and protect the well-being of patients and the public. Interest in healthcare professionalism has grown in recent years. Professionalism and professional identity are abstract concepts often expressed through attributes and qualities that professionals should possess. ये प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल आइडेंटिटी की एक जो आप कह सकते हैं समराइज्ड सी डेफिनेशन है वो ये है, abstract concepts that are expressed through attributes and qualities that professionals must possess. Standards for pharmacy in GB mention professional knowledge, competence, judgment, behavior, etc. But how well are these concepts defined and understood? Career development. Career consists of a period of time spent in a job or profession. Career क्या है? It is a general pattern of progress of a person as an employee. It is necessary to identify opportunities and constraints within the prevailing environment. This will help you to focus your effort on relevant area and avoid irrelevant or out-of-date aspects in the job market. अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें कौन से स्टेप्स आते हैं? प्लानिंग सबसे पहले। फॉर सक्सेसफुल करियर डेवलपमेंट, प्रॉपर प्लानिंग इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर करियर। That means
what do you want to achieve in next 5 years in terms of person or professional development. At least next 5 years का इमेज आपके सामने क्लियर होना चाहिए. 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप इज टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. इट मे बी रिलेटेड टू इंडिविजुअल स्किल्स, that means intrapersonal and interpersonal. अपनी क्वालिटीज को देखते हुए आपने प्रोफेशन को चूज करना होता है. किसी प्रोफेशन के लिए अगर आपके अंदर उसका शौक नहीं है, वहाँ आप अपने जिंदगी के 40 साल भी लगा देंगे, आपको करियर डेवलपमेंट हासिल नहीं होगी. तो ये प्लानिंग सबसे पहले आपने करनी है. उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस की बेसिस पे आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं जो किस प्रोफेशन में जाके फिट होती हैं. उसके बाद ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है. द नेक्स्ट स्टेप इज टू इम्प्रूव इन योर weak areas by adopting suitable strategies or opportunities. For example, if you need to update your pedagogical skills, अगर आपको किसी फील्ड में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है तो आप उस एरिया पे फोकस करें, अपने माइंड को उस चीज का आदी बनाएं कि आपने किस तरीके से किसी भी चीज को. रिफ्लेक्टिव टीचिंग को देखते हैं एंड डूइंग थ्रू व्हिच वन बिकम्स मोर स्किल्ड. A process that helps teachers think about what happened, why it happened, and what else could have been done to reach their goals. इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. The capacity to think creatively, imaginatively, and eventually self-critically about classroom practice. Reflective journal क्या है? A journal consists of observations, insights, memories, impressions, and feelings. Journaling is a way of having an open dialogue with oneself. It is mechanism in understanding the way you think, feel, and see. Writing a journal involves externalizing your thoughts, ideas, feelings, impressions, reactions, dreams, ideals, sorrows, yearnings, hopes, and experiences. The crucial thing is to keep writing for at least 10 minutes. To incorporate your hesitations or obstructions in your actual writing, and to let your imagination and your senses off the leash. It can be written daily, weekly, or after a certain time period, such as after every 2 weeks or monthly. However, it is desirable to write daily. ये आपको अपनी एट्रीब्यूट्स को, अपने वीक एरियाज को कवर करने का तरीका है. हाउ टू राइट. आप लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे? Writing well is irrelevant here. So our concerns about perfect spelling or grammar or even ease with words. Spelling, grammar, neat handwriting are not very serious issues when it comes to journal writing. Don't edit or rewrite as you go. यहाँ पर आपने लिखने के दौरान फोकस अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने कंटेंट को करना है. यहाँ पर आपकी ग्रामर की गलतियां कोई नहीं निकालता. These are the some practical suggestions while writing. Number 1, write in your journal regularly. वो जो आपने कहा कि डेली, वीकली, मंथली, जिस तरह भी लिखना है, आपने उसको एक स्केड्यूल को फॉलो करते हुए लिखना है. Combine the familiar with the unfamiliar. Keep your journal where no one else will read it. अपनी आपकी पर्सनल चीज है. It is possible to be a computer journal writer. Use a pen that flows smoothly and feel. Expect high performance of students and make learning a joyful activity. Guide students to resolve the conflicts in number of ways. Value students' comments and listen students' questions attentively. Plan their lesson on daily basis and share with students. Assess students for diagnostic purposes and share information with all stakeholders, particularly the parents. Security students work to use it as a reference. Plan lesson aligned with objectives clearly mentioned in curriculum. Plan has variety of learning material to use.
These are the qualities for a good teacher जो उसके अंदर होनी चाहिए. अब teacher as a role model is a person, ये आपने पहले भी discuss किया है, who inspires and encourages us to strive for greatness, live to our fullest potential and see the best in ourselves. A role model is someone we admire and someone we aspire to be like. We learn through them, through their commitment to excellence and through their ability to make us realize our own personal growth. We look at them for advice and guidance. तो ये देखें जी, टीचर को आपने दरमियान में खड़ा कर दिया और सारे स्टूडेंट्स जो कि ब्लू कलर में हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो इसलिए टीचर का इसलिए फिर उसका मकाम भी उतना ही ऊंचा है. So these were the simple 3 units you have studied today in your hand. Choose your journals lovingly. Forget what you wrote yesterday. हमेशा नए दिन के जो आप के एक्सपीरियंसेस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आप लिखें. पिछले से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है. Forms of journal writing. Journals come in any shape, size, or form. They exist as the 5-year diary with prescribed space for each day. They could exist as yellow sticky notes stuck on the walls of the room, or they exist not on paper at all. They may be electronic form, an audio or video tape, or in a word processed format, and no doubt they have been written on stone or walls of the caves. यानी आपने अपने एक्सपीरियंसेस को नोट करना है रोज की बेसिस पे. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने एक खूबसूरत सी किताब भी बनानी है, आप उस कोई भी शक्ल दे सकते हैं उनको. हम देखते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग इन पाकिस्तान. The Ministry of Education has developed national professional standards for teachers in 2009. Professional standards for initial preparation of teachers are comprised of 10 standards. Each standard has 3 parts. जिसमें कंटेंट है, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड वैल्यूज जिसको डिस्पोजिशंस के अंदर लाया जाता है, एंड परफॉर्मेंस मींस व्हाट टीचर्स डू एंड शुड बी एबल टू स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सेट किए हुए हैं. सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. स्टैंडर्ड 3 है नॉलेज ऑफ इस्लामिक वैल्यूज एंड एथिक्स. इंस्ट्रक्शनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, असेसमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड यूज ऑफ ICT, collaboration and partnership, continuous professional development and code of the ethics, teaching of English as a foreign language. These are 10 standards that were established in 2009. Along with the mastery of the body of knowledge, teacher profession requires certain set of skills and attitude. Professional standards may help to smooth the activities of any profession to get the optimal outcomes within a limited time. These standards can serve as criteria for professional development of the teacher. Hence, it can be used for professional learning, self-assessment, and coaching of teachers. It was presented in 1981, and these treaties advocated following recommendations. Number 1, free and compulsory primary education of all the children. Number 2, a responsible approach towards developing secondary education accessible for all children and equitable access to higher education. And number 3, provision of basic education for those who have missed the chance of primary education. पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो आर्टिकल 37B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट करता है द स्टेट शैल remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education within minimal possible time. Article 25A, it states that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. Pakistan is one of the signatories of EFA amongst 164 countries, and government of Pakistan pledged to achieve all 6 goals of EFA to be met by 2015. The year 2015 has passed, and this dream still yet to come true in Pakistan as we are far behind in achieving the goal of EFA. ये कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल्स
कंपल्सरी कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन को, ये आपको बताया हुआ है, लेकिन गोल्स हम सेट कर लेते हैं, वो अचीव मुश्किल से ही होते हैं। क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है? क्वालिटी एजुकेशन मीन्स अ टाइप ऑफ एजुकेशन where students learn from qualified teachers, learn well and play well. अब ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ये अगर आप अचीव करते हैं तो आप उसको क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं। दे फील कंफर्टेबल इन लर्निंग एनवायरनमेंट, दे लर्न अकॉर्डिंग टू देयर पेस ऑफ द लर्निंग, their views are valued, they receive positive feedback from the teachers, they have good relation with their teachers, they get proper attention of the teachers, they feel secure, they are treated in respectable manners, their needs and interests are always taken seriously. अगर ये चीज़ों को आप अडॉप्ट करते हैं और एजुकेशन देते हैं बच्चों को, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज क्वालिटी एजुकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है जो मुझे लगती है, दैट इज़ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ द लर्निंग। अपने बच्चों को आइंस्टाइन नहीं बनाना, उनको न्यूटन नहीं बनाना, आपने उनको पेस के अकॉर्डिंग सिखाना है। What are the professional wrongs? Professional wrongs mean all actions or behaviors of the teachers which are not at par with existing demand and need of the time to prepare students for 21st century. हर वो एक्शन या बिहेवियर जो आप उनको सिखा रहे हैं, या तो बहुत ओल्ड सिखा रहे हैं या बहुत एडवांस सिखा रहे हैं, वो आपके पास प्रोफेशनल रॉन्ग्स में इंक्लूड हो जाता है। इफ दे डू नॉट शो enthusiasm with profession, if they are not committed to their duties, ये सारे प्रोफेशनल रॉन्ग्स हैं। इफ दे डू नॉट नो about national curriculum and use it as guide for teaching learning process, if teachers teach students without preparation, if teachers do not develop links between previous learning of the students with new learning, if teachers do not broaden and deepen knowledge base of student, if teachers do not prepare students mentally for learning, if teachers do not involve students in learning process, if teachers do not encourage students participation. So these are all the professional wrongs. Biasness and indulge in paperwork during class instead of working with students, do not address parents' concerns properly and lacking in conflict resolution skills, use inappropriate language, ridicule students, always defensive, have confrontations with students and do not own whatsoever occur in classroom, inconsistent in approach of the teaching, monitoring or other tasks, ये भी professional wrongs हैं. Schools are established to inculcate acceptable habits and behaviors in new generation. इसको link up purpose है. It is also thought that individuals possess knowledge, skills for and dispositions in schools where they interact with highly qualified, experienced and knowledgeable personalities. Societies establish schools to preserve and transfer their culture, traditions and customs to new generation. Curriculum which is taught in schools actually reflects the overall national thinking. Teaching क्या है? Teaching is defined differently by different people in general and teachers in particular. Teaching is an art. There are some others who will say teaching is a science. अब ये देखें ये कितना मुश्किल प्रोफेशन आ जाता है कि बाज़ औक़ात इसको कुछ लोग एक साइंस कह डालते हैं. Teaching is an act of telling our experiences answers to those who don't know. Psychologists may define teaching in terms of stimuli, response, conditions. Simply, it is a way of transmitting information to others through careful planning in order to achieve set objectives. It is also a process of interaction through which learners learn. तो ये इसकी एक brief सी definition है. It is process in which learners gain knowledge, develop their skills and dispositions. लेकिन यहाँ पर देखें, जहाँ पर भी आप नॉलेज की बात करते हैं वहाँ पर आपने साथ स्किल्स की बात करनी है. टीचिंग का काम सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर नहीं है. Assume ownership of students. एक अच्छे टीचर के लिए आप क्या क्वालिटीज हैं?
Assume ownership of the student's success and what's going on in the classroom. एक अच्छे टीचर को इसका पता होता है. Share personal experiences for clarification of the concepts. Understand what students feel in the classroom. Communicate effectively with students. Open to accept mistakes and correct them immediately. Think about and reflect practically. Have a sense of humor. Wear proper and appropriate dress. Maintain secrets of and respect the students. Plan their activity yet flexible. Responsive to students' needs.